Hello students, welcome on my video. Today we started new method, capitalization of profit method. In previous lecture we discussed super profit method and I hope you all are understood. So before starting this method, if you don't subscribe our channel, so please subscribe our channel and hit the bell icon for more videos. Okay, so let we start this method number 4. So in this method students, we have two types: capitalize weightage average profit or average profit. Otherwise second type is capitalize super profit. That means ये जो आपकी मेथड है उसमें टू टाइप्स के सम्स होंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड थिंग सुपर प्रॉफिट वाले मेथड के आपके सम्स होंगे ये मेथड में. क्लियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व फर्स्ट capitalize weightage average profit or average profit. Okay, so in this method we have 5 steps. Step number 1 is capital employed. So capital employed is equal to total assets minus total liabilities. Step number 2, expected rate of return, that means ERR, already given in the sum. Step number 3, find the average profit or weightage average profit. That means if given profit is constantly increase or constantly decrease, so at that time we find the weightage average profit. Otherwise if given profit are fluctuating, so at that time we find the average profit. Okay, so these both are dependent on the questions. Okay, then step number 4, capitalize average profit. If we find average profit in step number 3, so here in step number 4 we use first formula for average profit is equal to average profit upon expected rate of return multiply by 100. अगर हमने स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है, सो हमें स्टेप नंबर 4 में कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? सेकंड नंबर का कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये जो स्टेप नंबर 4 है वो स्टेप नंबर 3 पे बेस करता है. क्लियर? अगर हमने स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है, सो हमें स्टेप नंबर 4 में ये फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करके कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. अगर हमने वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया स्टेप नंबर 3 में, सो हमें ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. क्लियर? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 4 स्टेप, लास्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड इज स्टेप नंबर 5, गुडविल. सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट, ऑलरेडी फाइंड इन स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में हमने ऑलरेडी ये फाइंड कर दिया कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में फाइंड कर दिया है. क्लियर? सो आफ्टर सिंपलीफाइड फॉर्म वी गेट आंसर ऑफ द गुडविल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट. सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल स्टेप इन योर नोटबुक एंड लेट वी अंडरस्टूड बाय वन एग्जाम्पल. ओके, सो ये सब स्टेप आप नोट डाउन कर दो. हम लोग सम में डायरेक्ट ही आपके फॉर्मूला आप नोट डाउन नहीं करेंगे बट डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट डाउन करेंगे. सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल स्टेप्स. सो हियर sum number 10 of your exercise students. Nairutva and Rutvik firm. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of capitalization of weightage average profit method. Business assets is rupees 6 lakh. Business liabilities is rupees 1,70,000. Expected rate of return is 10%. In the year 2012-13, profit of the firm is 45,000. In the year 2013-14, profit of the firm is rupees 50,000. In the year 2014-15, profit of the firm is 65,000. Next year 75,000 and last year 2016-17, profit is rupees 90,000. That means students here given profit is constantly increase. That means here we find out the weightage average profit. Okay students, so let me start the sum. So step number 1, capital employed. So what is the formula for capital employed? So total assets
minus total liabilities. Total assets minus liabilities. So total assets is 6 lakh rupees already given in the question, and total liability is 1,70,000. So after deducting, our capital employed is rupees 4,30,000. Clear students? Here our step number 1 is over. Now we find the step number 2. So what is the step number 2, students? Expected rate of return, that means ERR. So expected rate of return is already given in the question, 10%. So here we directly note down 10%. Clear? Then step number 3. So in step number 3 we have two types, average method and weightage average. So here profit is constantly increased, so here we find out the weightage average profit. Weightage average profit. So first of all we mention the year, second one is profit, third one is weight, and last column is weighted profit. Clear? So here already given in the question, for the year 2012-13 profit is 45,000. For the year 13-14 profit is rupees 50,000. So here we mention all the year and all the profit. Then third column is weight. So for the first year we allocated weight 1, for the second year we allocated weight 2, for the third year 3, for the fourth year 4, for the fifth year weight is 5. So total weight is 15. Then now we find weightage profit. So how to find weightage profit? So multiplication of profit column and weight column. So 45,000 multiplied by 1. So for the year 2012-13 our weightage profit is 45,000. For the second year 50,000 multiplied by 2 lakh, that means weightage profit is 1 lakh. For the next year 65,000 multiplied by 3, so our weightage profit is 1,95,000. For the next year 75,000 multiplied by 4, so our weightage profit is 3 lakh. For the last year profit 90,000 multiplied by weight 5, so 90,000 multiplied by 5, so our weightage profit is 4,50,000. Now we do addition of this column last. So our total weightage profit is 10,90,000. Then now we find the weightage average profit. So weightage profit total 10,90,000 upon total weight is 15. That means our total weightage average profit is rupees 72,667. Understood students how to find this weightage average profit? Okay, now we find step number 4. What is our step number 4? So step number 4 is capitalized weightage average profit. So what is the formula for capitalized weightage average profit?
So weightage average profit already find in the step number 3, 72,667 upon expected rate of return already given 10 multiplied by 100. So our capitalized weightage profit is rupees 7,26,670. ऑल आर अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड स्टेप नंबर 4. इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अभी प्रीवियस जो पेज था उसमें हमने वो लिख लिया है कि क्या उसका फॉर्मूला है. सो कैपिटलाइज वेटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ वी फाइंड लास्ट स्टेप. व्हाट इज द लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स? सो स्टेप नंबर 5 इज goodwill. So goodwill is equal to capitalize weightage average profit minus कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने ऑलरेडी अभी प्रीवियस सम में प्रीवियस पेज पे उसका फॉर्मूला देखा हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड CE कैपिटल एम्प्लॉयड. सो 7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयज इज स्टेप नंबर 4, 4,30,000. सो आवर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,96,670 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 5 क्या है हमारा? गुडविल. सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वेटेज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी फाइंड इन स्टेप नंबर 4, 7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी फाइंड इन स्टेप नंबर 1, 4,30,000. So after deducting this both amount, our goodwill value of the our goodwill is rupees 2,96,670 rupees. So I hope you all are understood how to find goodwill by the capitalized weightage average profit. So please note down this sum in your notebook. Let we see students second subtype of method number 4, capitalize super profit. So in this method again we have 6 steps, but don't afraid, this first 5 step is similar to method number 3. ये फर्स्ट 5 स्टेप्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है? सेम टू सेम मेथड नंबर 3 के स्टेप है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4 फाइंड द एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट, एंड लास्ट जो स्टेप है वही आपको ऐड करना है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट में. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन ERR, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100. सो स्टूडेंट्स जो 5 स्टेप्स हैं वो तो हमारे मेथड नंबर 3 के ही है फर्स्ट 5, और लास्ट में जो ऐड हुआ गुडविल, सो ये आप लोग नोट डाउन कर दो, फिर हम लोग इसका भी एक सम करके देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट वी सॉल्व सम नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुज फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड. Capital employed is rupees 9 lakh. Expected rate of return is 12%. Last 5 years profit is respectively 1 lakh, 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,80,000. That means this given profit is fluctuating. So on the basis of this profit, in step number 3 we can find the average profit. Okay students, so let me start this sum. So step number 1,
What is the step number 1, students? Step number 1 is capital employed. So capital employed already given in the sum rupees 9 lakh. So here we directly put the values of capital employees 9 lakh. Then step number 2. What is the step number 2, students? Expected rate of return ERR already given in the question 12% said. So directly put the values. Then step number 3. What is the step number 3, students? Expected profit So what is the formula for expected profit, students? So capital employed multiplied by expected rate of return upon 100. So here we note down formula: capital employed multiplied by expected rate of return ERR upon 100. So let me put the values in this formula. Capital employed is 9 lakh rupees multiplied by 12 upon 100. So our expected profit is rupees 1,08,000. Understood, students? Then we find the step number 4. What is the step number 4, students? Average profit or weightage average profit. So here given profit is fluctuating, so here we find the average profit. So how to find average profit, students? So total of the profit मतलब जितने भी हमें प्रॉफिट दिया वो सबका टोटल करना है. सो 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 divided by number of the year. So 1 2 3 4 5 years. So after division our answer of average profit is 1,40,000. Understood, students? Here given profit is fluctuating, so here we find the average profit. Then step number 5. So what is the step number 5, students? So step number 5 is super profit. So what is the formula for super profit? So super profit is equal to average profit minus expected profit. Average profit हमारा कितना है, students? Average profit minus expected profit. ये ऑल फॉर्मूलाज मैंने स्टूडेंट्स मेथड नंबर 3 हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ऑलरेडी मैंने ये सब के सब फॉर्मूला डिटेल में आपको नोट डाउन करवाया. सो प्लीज़ वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना. एवरेज प्रॉफिट इज 1,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन स्टेप नंबर 3 1,08,000. सो आफ्टर डिडक्टिंग आवर सुपर प्रॉफिट इज rupees 32,000. Okay, students? Then our last step is step number 6. What is our step number 6, students? So goodwill. So in this method, how to find goodwill? So formula for goodwill is super profit
super profit upon ERR, that means expected rate of return multiplied by 100. So here we put the values. Super profit is rupees 32,000 upon expected rate of return is 12 multiplied by 100. So after simplify form we get answer of goodwill is 2,66,667 rupees. So I hope you all are understood, students, how to find capitalize super profit. So please note down this sum in your notebook. If you like this video, so please like, subscribe and share with your friends and family. Thank you.